अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज फिर मौजूद हूँ उसी बाइक के पास जो हमारे मैकेनिक भाई हैं। तो कल जो हमने बाइक को डिसअसेंबल किया था, सारे पार्ट्स निकाले थे, उसकी फ्रेम का थोड़ा सा मसला था, टेढ़ी थी। फ्रेम ठीक करवाने के लिए तो फ्रेम ठीक हो गई है, आज हम उसको रीअसेंबल करेंगे। तो मैं वीडियो बनाता हूँ, उम्मीद है आपको पिछली वीडियो भी पसंद आई होगी, तो ये वीडियो भी उम्मीद है पसंद आएगी। क्योंकि पूरा बाइक का जो स्पेयर पार्ट है सब कुछ अलग करके लगाने में टाइम तो बड़ा लगता है, लेकिन यह है कि बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, बड़ा मज़ा आता है। चलिए आए आपको दिखाते हैं कि कैसे रीअसेंबल किया जाता है बाइक। ये वाली फ्रेम है जो टेढ़ी थी, कल निकाली थी, आज इसकी सारा काम हो गया कंप्लीट। अब ये बाकी पार्ट्स भी पड़े हुए हैं बाइक के, इधर इधर पूरी दुकान में बिखरे पड़े हुए हैं। अब इसको रीअसेंबल करेंगे आज इंशाल्लाह।
किलोमीटर चल दी है अगर तेल चल हाँ। देखना हूँ इसकी इतनी जगह नहीं पर आ वैसी जी फ्रेंड्स,
हमारा बाइक जो है वो रीअसेंबल हो चुका है। आपने पूरी वीडियो देखी होगी। बहुत शुक्रिया चैनल पे आने के लिए, वीडियो को वॉच करने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो किसी न किसी के काम आएगी, कोई ना कोई इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। हमें तो बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हमने वीडियो भी बनाई है और बहुत सारी चीज़ें खुलते जुड़ते देखी हैं। ठीक है, फ्रेम अब ठीक हो गई है, बाइक तैयार है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, बाइक रीअसेंबल हो गई है, तैयार है। बहुत शुक्रिया चैनल पे आने के लिए, वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।